उसे कुछ कर ही नहीं रहा था। मैंने कहा तिलावत करो ना, और मेरे साथ 3 लोग खड़े, तो उसे तिलावत शुरू की, वो चला गया। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई तुमने हमारी फूली करा। बिकॉज मेरी क्लास फेलोज आ रहे थे, लाइक खुबैब आज क्या बना रहा है, मैं सबको कहा मैं वॉशरूम बना रहा हूँ। दे वर लाइक कि क्या कर रहे हो? इट्स नॉट लाइक इट इज इन द मूवीज, लाइक इट्स एटलीस्ट डिसेक्शन क्लास। बोल रहे हैं ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मैंने क्लास में भी एम्ब्रॉयडरी की थी एक दफा, लाइक आई थिंक it was एनाटमी की क्लास, उसी अम्मी का जो एम्ब्रॉयडरी हुप होता है ना, एंड आई वाज एम्ब्रॉयडरिंग ऑन माय ओवरऑल ना, मैं वैन गो का मून बना रहा था। एंड आई वाज लाइक क्या कर रहा है, लाइक व्हाट इज दिस ना। वो कभी कभार हम बहुत मजाक करते थे, तो एक साइलेंट वो गिगल्स होती थी ना, तो वन ऑफ द गर्ल्स स्क्रीम्ड एट अस दफा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट सीरीज। और आज के हमारे गेस्ट इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन, ही इज़ अ वेरी ग्रेट आर्टिस्ट एंड ऑल्सो अ हाउस ऑफिसर। तो आई वेलकम मोहम्मद खुबैब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं खुबैब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फाद, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगा दैट इज़ के हाउ इज़ लाइफ? Go, alhamdulillah, it's good. I'm at a point in my life so I have no complaints because uh, job is good, I guess. और कॉलेज भी ख़त्म होने वाला है, द कैंपस, लेकिन इट्स गुड अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल नो यू और फेमिलियर विद यू, मैं भी आपको जानता हूँ, और लाइक देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस यू फॉर्मली, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? Yeah, I am Mohammed Khubaib. Like, people ask me, like, they call me an artist. Like, and I don't know, I just write something, I just paint something. I don't think it's very special. Like, and I like that it resonates with people. Or I guess that's it. I feel like it all depends on a person, how they look at me. So I'm not sure how to introduce myself, to be honest. There must be something ना, अक्सर होता है कि बंदा आप चाहते हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे होना चाहिए, लेकिन Yeah, I've actually never thought of that. Maybe like some point in the conversation, I would like the person to know that I do have a creative side and I like to watch a lot of films. I create art. I guess that's it. you didn't mention your medical journey. What's up? Don't Yeah, recognize yourself as a doctor or what? yeah, honestly, inshallah, when you graduate, you'll feel like, I don't know if it's just me or something. Like whenever like somebody, us din I guess hua tha, somebody asks me, okay, what do you do? Like, I can't say I'm a student anymore because I'm not a student anymore at this point. So my first like answer is that I work at a hospital, and I don't say I'm a doctor because I don't know, it feels very uh, weird a little saying I am a doctor because I am what, like 25, 26, right? Or at this point, calling myself a doctor would be, I don't know, why does it feel like an exaggeration? Like, and I did see a similar explanation to this phenomena or this concept by another doctor who felt the same way. So I never say I'm a doctor, to be honest. This is strange क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मेडिकल स्टूडेंट से they call themselves a doctor. Nah, I think I never even had my stethoscope when I was in third year. I was actually not going to buy it, लेकिन फिर अप्पू ने बोला था कि ले लो. फिर final year तक I had that, people bought themselves a Litman. I think my sister gave me a Litman when I graduated from medical school. So I still have that, लेकिन I don't know, अजीब लगता है थोड़ा सा calling myself a doctor. ठीक है। अच्छा, coming to the next point, like I saw your paintings. I even saw you painting at Arts Gala जो यहाँ पे हुआ था ASF वगैरह। So you paint very good, माशाल्लाह। तो ये मैंने पूछना था कि why you opted for medicine? Was it a family pressure? वो चाहते थे कि आपको डॉक्टर बनाना, या आपका अपना शौक भी था? Yeah, Fahad, ever since childhood, I wanted to be a doctor, to be honest. I was a straight A student, or because पता नहीं, बस I just wanted to be a doctor. I don't know what the motivation behind that was. When I was in, I guess, FSC, तो उसमें I wanted to discover like what other fields were out there, right? I wanted to maybe pursue engineering or go into an art school. लेकिन Appu always used to say कि like देखो, if you go into art school, you'll be an artist. Say, that's a good thing. But if you go to medical school, you'll be a doctor and an artist. And I feel like that's something that makes me stand out. मैं जब first year में यहाँ आया था, there was a competition that was going on. I guess it was called National Youth Carnival था, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया था, खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट थी. तो उसमें there was a photography competition. I don't know if that was a calling
to remind me that the decision I had taken was the correct decision, yeah, whatever it was. Like I got a gold medal in it. It was photography competition, and I was like, maybe this is it. This is what I needed to do. And I have at this point, I feel like I would never exchange this with any profession in my life. Exactly. यही बात है ना कि I was thinking about it कि like being in NCA National College of Arts and you're an artist, you're creating things, it's not that special. But being ना a अब doctor लोगों or के लिए होगा, engineer, लाइक सही है, लोगों के लिए होगा, टू ईच देयर ओन, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स मी. I would never have survived in art school for some reason. I don't know why. that's why you're being in medical school and artist वो काफी मजे का recognition मिल जाती है. Nah, like Ayub has been a very beautiful journey, to be honest. Okay. ये बताएं मुझे कि what was your idea of art then and what's your idea of art now? Yeah, I'm not sure if the idea has changed, but maybe my painting style has changed somewhat. I'm not sure how to answer that. Like पिछले maybe I used to recreate a lot of painting. Like मेरी जो अगर तुम देख पाओ, I used to paint a lot of Max Rose. I feel like I have had enough with that. I want to maybe paint something original. And the last paintings that I did, a few of them, मैंने self portraits बनाई थी. I was like really, it came out really beautifully. मैं बैठा था, लोग आ रहे थे, they were like, तुम क्या पेंट कर रहे हो? Because everybody used to come, मेरे क्लास फेलोज आ रहे थे, तो like खुबैब आज क्या बना रहा है? और मैंने तस्वीर ली थी of me standing in a washroom और मैं वो पेंट कर रहा था, right? तो अब मैं सबको कहा मैं वॉशरूम बना रहा हूँ, they were like कि क्या कर रहे हो? And then when I painted the floor of that painting, like अभी वो मेरे पास पड़ा है, they didn't frame it for some reason, लेकिन I'm proud of that painting that I've done. Yeah, I remember that making you making it in art scala. आर्ट्स का नाम बनाई थी. Like शुरू में मैंने भी जब देखा था, it was all pink हाँ, वो मैंने background. पिंक बैकग्राउंड बनाया था. I guess I was looking for, going for a cyberpunk kind of look or whatever it was, like, and it came off really beautiful. Okay, what do you think? How would your artistic idea will develop in future? Yeah, I guess that's for the future to decide कि क्या होता है अभी आगे मेरे साथ. Because I know I have read about how, and I feel like that's true too कि an artist's experiences what changes him the most. तो देखते हैं कि आगे क्या होता है. ये हो गया. और like start में when did you start painting? And do you यार remember your very first painting जो आपने बनाई? यार ये क्वेश्चन जब मेरे से कोई जब भी पूछता है ना, तो आई रिमेम्बर लाइक एक स्क्रैप बुक होती थी बैक देन व्हेन आई वाज इन वन क्लास या समथिंग, जिसमें पेस्टल कलर्ड पेजेस, वो चार्ट पेजेस होती थी, राइट? तो माय सिस्टर हैड दिस सेट ऑफ वाटर कलर्स एंड शी पेंटेड अ हार्ट विद इट, जो लाइक नॉर्मल, नॉट द एनाटॉमिकल हार्ट, उसने बनाया था. और आई डोंट नो, आई वाज सो अमेज्ड बाय हाउ नीट इट वाज. और उसके साथ में आई गेस सुभान अल्लाह लिखा था या समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द डिटेल्स ऑफ द पेंटिंग. And I was so impressed by that. And now I guess that was the first point when I started drawing wherever I could. Like उस time बहुत crappy थी, अभी crappy होगी, लेकिन Do you have I that can, painting or not? nah, I don't think so. It was just like a random heart. ठीक हो गया. अच्छा, uh, talking about MBBS, like most of people say MBBS is very much difficult. So I'm in third year right now. I'm struggling with MBBS. Obviously, मुझे भी शौक है काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह बनाने का, लेकिन I think like जब मैं स्टडीज की तरफ आता हूँ then I could not manage to do that my passion with that as well. So was it challenging for you also, or how did you manage to carry on with your profession and passion? Yeah, to be honest, I don't have one hobby. I have a lot of hobbies. But anyway, I would what's love to. about that? लेकिन बहुत मैं करता हूँ. I have even learned how to embroider. मैंने किया है. मैंने क्लास में भी एम्ब्रॉयडरी की थी एक दफ़ा. Like I think it was anatomy की क्लास थी या पता नहीं थर्ड ईयर में किसी की क्लास थी. And I had that Aris, a class fellow of mine, she brought me उसकी अम्मी का जो एम्ब्रॉयडरी हुप होता है ना. And I was embroidering on my overall ना, मैं वैन गो का मून बना रहा था. And everyone was just like, क्या कर रहा है? Like, what is this? ना? So I have like a lot of hobbies. I guess the key is to have a specific timetable or like an organized schedule for the day. Like अबू इसके बारे में बहुत कहते थे कि तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए. और मैं उस टाइम like as उस टाइम तो मैं स्कूल में था ना. TMC was my first hostline experience. मैं इतना चिढ़ता था, I was like कि क्या हर वक्त टाइम टेबल, लेकिन I know the उसकी अहमियत अभी इम्पोर्टेंस मुझे पता चली है कि like with when you have a timetable, when you have specified time for everything, like anything is achievable इंशाल्लाह. हो जाता है. ये हो गया तो मतलब कि आपकी और भी काफ़ी हिडन साइड्स है which हमें नहीं पता. Maybe your classmate know, but we don't know. Like the embroidery वाले, yeah, this was a new thing for us. ना आई गेस मैंने बहुत किया था एम्ब्रॉयडरी पे. मैं वो आई ट्राई टू रिक्रिएट वो स्टारी नाइट, बहुत ज़्यादा उसमें मैंने किया था. मून्स मैंने बनाई थी उसमें. I painted a starry night, लेकिन
बहुत मुश्किल। इट्स सो एक्चुअली पहली चीज सेटिस्फाइंग लाइक टू हाँ सी बहुत द कलर्स गोइंग बहुत अराउंड। मजा आता है उसका। मजा आता है काफी। हो गया। आप आयु आए थे आई गेस 2017 में यू विल जॉइन। हाँ आई थिंक it was 31st October 2007। 2017. So what was your idea of Ayub before you came here and after you joined Ayub? Like, यार does it मेरा resonated with your expectations? no, it was not according to my expectations. Because at that point, and as I told you, I was going through that phase of art school and everything, na. और I had aimed for AKU. मुझे I didn't get an admission in AKU. और फिर NCA तो मैंने वो किया ही नहीं, and I did not apply for any other place. मैंने डम्स का भी नहीं किया था ना आर्मी का दिया था। मैं आया हूँ I had like you know you know how they portrayed in the movies, right? And it's not like it is in the movies. Like it's at least the dissection class. 'Cause it's nothing like the movies. ना बैठे हैं उससे we were like being taught on a post like ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ. It was quite depressing. लेकिन then uh, we used to hate on this college so much, me and Josefa. Like बहुत ज़्यादा we used to hate on it. I guess it grew over us in the first year. So what was it like planned? You wanted to join Ayub? या कुछ लोग होते हैं जिनका Nah, होता है कि एम्स ड्रीम होता है but eventually they no, end up no, in it Ayub. was not a dream. A part of me did want to come to Ayub क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई था he wanted me to go to Ayub because he knew that I liked photography a lot और उसे पता था कि like mountains and whatnot like it was really accessible from this place. So I guess he was the और हाँ like पता नहीं my sister like told me कि bro just don't do it at Peshawar like you're getting an opportunity to be go out there तो चले जाओ like she urged me to do it तो एक तो बस मेरिट भी बन रहा था और God wanted me there अल्लाह ने बस चाहा मैं यहीं पे आ गया। ठीक है। वैसे अभी तो लाइक देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, हर दूसरा बंदा इज मेकिंग वीडियोस रील्स। तो अभी जो नॉन मेडिक्स हैं लाइक द एमडी एस्पायरेंट्स हो वो, तो दे हैव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ यू। वो वही वाली बात आ जाती है मूवीज में देखने हाँ वाला हाँ रियल। like we are creating those यस, movies at उस this वक्त point। तो आई गेस इतना कुछ नहीं था जब आप उस लोग वक्त यहाँ पे कुछ आए भी थे। नहीं था like even Aptapad was not as developed as it is now like मेरे जो सीनियर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी लकी इन द फ्रेंड्स इन द सीनियर्स डिपार्टमेंट वो बहुत अच्छे थे लेकिन कुछ भी नहीं था आई गेस मैं आई हैड माय फोटोग्राफी अकाउंट बहुत टाइम से 10th क्लास से मैं फोटोग्राफी करता था उससे भी पहले लेकिन आई स्टार्टेड पोस्टिंग 10th क्लास से फिर मेरा जो अकाउंट था मैंने डिलीट कर दिया था एंड आई मेड अ न्यू वन फिर वो भी मैंने डिलीट करके न्यू वन आई जस्ट केप्ट गोइंग थ्रू इट टू डिस्कवर माय स्टाइल और आई गेस अच्छा बनाए। What do you think like how is AU as a medical school and as a place for grooming? Yeah, I would never want to. If I had to experience all these 5 years again, I would never do it anywhere. Even like if AKU was an opportunity, of course, like AKU is an amazing university, or the experience I would have had there would have been much like बहुत बड़ी होती है इस क्या इस सीखने को बहुत कुछ मिलता एप्टीट्यूड है। हाँ मुझे बहुत कुछ मिल जाता लेकिन आई फील लाइक यहाँ जो लोग मुझे मिले हैं ना आई कुड नेवर हैव हैड देयर और यहाँ पे जो ग्रूमिंग हुई है लाइक आई ओ इट ऑल टू यू द पीपल हियर कुछ भी लाइक यू और द पीपल लाइक both of them you will know when you graduate from this place। Right now it seems a lot of like बहुत बड़ी जर्नी लगती है लेकिन ना ना जिस लाइक तरह वो दो हमें साल भी गुजर। लगता था वो लाइक लुक एट अस हम एकदम से बस ग्रेजुएट ही हो गए वी आर डॉक्टर्स वो भी अब चले गए I अभी। remember your graduation week, you were just doing वो Wolverine था I guess हाँ आई क्या। वाज लोगन लाइक हर कोई कह रहा था ब्रो ना करो लेकिन वो अच्छा था ग्रेजुएशन। फाइनल ईयर आप लोगों का खत्म हो रहा था, तो was it emotional for you guys like यस लाइक कि जा बहुत रहे हैं इस ज्यादा कॉलेज से। आई रिमेम्बर हमारा जो ग्रेजुएशन वीक था ना तो आई हैव लाइक जब हमारा जूनियर है माहत राइट तो ही इज लाइक रियली क्लोज टू अस तो वी वांटेड स्पेशली आई वांटेड हिम देयर लाइक टू एक्सपीरियंस दैट गुड बाय विद हिम राइट तो हमारा जो स्क्रब्स डे था स्पेशली इट वाज रियली इमोशनल फॉर अस क्योंकि उसी दिन हमारी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन हर सिस्टर्स वेडिंग वाज ऑन दैट डे ऑन दैट वेरी डे और हम उसकी शादी पे गए थे उस दिन I remember we changed like 7 outfits in that on that day or something. हम पहले गए उसकी शादी पे फिर हमने वहाँ पे चेंज किया था इन दैट ब्राइडल रूम इनटू आवर स्क्रब्स वहाँ से हम वापस आए ओले में हमारा ओवरऑल वो साइनिंग वो सब कुछ हो रहा था फिर हम लाइक हर एक उसके बाद हम बाहर जाते थे चाय पीने it was a very good week like especially that scrubs day मुझे याद है it was very fun very emotional for all of us। आपकी we saw your video जो आपने बनाई थी अपने ग्रेजुएशन हाँ पे। I'll display that on the screen also।
I really love that. It वो was so emotional for us, even us ना, क्योंकि हम लोग तो थे भी सेकंड ईयर में, but it felt like है कि जब हमारे पे टाइम आएगा तो like I did not know that video would be so well done लेकिन उससे हमारे पास like I told all of class fellows कि caps बना देला लेकिन I knew like कि caps बनाना हर किसी कोई नहीं करेगा क्योंकि and we did not have any caps with us तो at first मुझे लग रहा था कि हम अगर overall super पहनेंगे ना तो that would be kind of a disgrace लेकिन वो जब हो गया ना and I processed the video तो बहुत प्यारी लग रही थी anyway like बार बार हम देख रहे थे उससे फिर okay. So which year would you like to rate as your best year in you? 5 साल यारा हर ईयर जो था ना फहद तो ऑल ऑफ देम हैड देयर प्रोज एंड कॉन्स फर्स्ट और सेकंड ईयर बहुत अच्छे इसलिए थे बिकॉज वी वर द मोस्ट जूनियर्स और उसमें लाइक वी हैड और सीनियर्स दाऊद भाई एंड अरकम भाई और लाइक बोथ ऑफ दोज वर लाइक वेरी क्लोज टू मी दाऊद भाई स्पेशली ही वाज लाइक वो मेरे मेंटोर थे ना अभी भी जो कुछ yes, होता है top तो post आपने उनके बारे में हाँ लाइक दाऊद भाई इज माई गो टू पर्सन व्हेनेवर आई हैव अ प्रॉब्लम इन कॉलेज या जो भी हो ना तो उसके बाद में जाता हूँ फिर थर्ड ईयर वाज कोविड उसमें तो वो एक अलग फेज था आई फील लाइक हमारा जो वो था ना स्पेशली बैच जो था ये मैं अक्सर सोच रहा हूँ वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज हैपन इन लाइफ बहुत ज्यादा लाइक वी सॉ प्री कोविड अयूब वी सॉ इंट्रा कोविड अयूब पोस्ट कोविड अयूब हमारे सामने एसटीसी बना जो डेंटल कॉलेज था वो बन गया तो अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस और बहुत सारी चीजें अयूब में चेंज हुई हमारा जो था तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ये अच्छी बात की थर्ड ईयर तो निकाल ही दो हमारी छुट्टी थी सारी फिर फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में ये था कि आई गॉट क्लोजर टू माय फ्रेंड्स ग्रुप उसमें मैंने तब से यहाँ लाइब्रेरी में ही गुजारी और वो बहुत अच्छा टाइम था तो आई वुडंट इंडिविजुअलाइज वन ईयर एज द बेस्ट ईयर लेकिन लाइक सारे अच्छे थे एक्सेप्ट थर्ड ईयर जिसमें हम कॉलेज में गए थे मोस्ट ऑफ द पीपल उनसे जब पूछा जाए ना तो दे रेट 2022 जो हमारा फर्स्ट ईयर था एज द बेस्ट ईयर, क्योंकि वो कोविड के बाद कॉलेज खुला था एंड अयूब वाज ऑन इट्स पीक लाइक इवेंट्स में और बाकी हर एक चीज़ों में। उसमें ये तो था कि दे आई वुड से अगेन कि दाऊद भाई आए थे ना उसमें सब दोस्त साथ थे वो इट वाज द फर्स्ट शाम बहार राइट यस वही था हाँ तो उसमें वो आए थे आई रिमेम्बर हम वहाँ ऊपर बालकनी के ऊपर खड़े थे और हम बातें कर रहे थे कि दिस माइट बी द फर्स्ट फन फेयर ही वुड विजिट ना और इट वाज अ गुड ईयर हाँ इट वाज अ रियली गुड ईयर सब अच्छे गुजरे you like the subspecialty of radiology, so is there any specific reason, because most of the people want to go to neuro or endo? यार क्या था मैं जब उसमें था फाइनल ईयर में ना तो आई स्टडी अ लॉट दिखता नहीं है लेकिन आई लाइक स्टडी अ लॉट I know तो you got second position in your prof exam. वो वाज ऑल लाइक अल्लाह की तरफ से था लेकिन उसमें लाइक मेरा कभी न्यूरोसर्जरी की तरफ वो नहीं था मे बी सम पॉइंट व्हेन आई वाज इन फोर्थ और फिफ्थ क्लास मे बी लेकिन आई डोंट रिमेम्बर इट वेरी डिस्टिंक्टली पहला तो उसमें आई वाज लाइक यार न्यूरोसर्जरी इज is the reason I am denying neurosurgery as a field of choice because it's tough. Like हर किसी ने किया why can I not do it ना लेकिन then when I came into लेकिन मेरा जो mostly वो था ना my the choice of my specialty that I wanted to go further in was ophthalmology, dermatology, plastic surgery, and radiology. क्योंकि like I would uh, I rather go to work daily than like मैं इतना ज़्यादा काम करूँ कि मेरी nights भी लगे. I want to have a work-life balance in my life. Like work or life separate हो ताकि I can do this other things ना. Medicine was never appealing to me for some reason. Neither was surgery और बाकी जो specialties थी they were like उसमें you're always on call और पता नहीं क्या क्या करते हैं like even in house job general medicine में और general surgery में nights थी like nights were काफी सारे समय तो अगले दिन का जो रूटीन होता था ना वो खराब हो जाता था I hate it that तो inspired one of the reasons was that और दूसरा आई हैड गुड सीनियर्स यहाँ पे तो आई गेस डर्मेटोलॉजी और रेडियोलॉजी दीज टू आर द बेस्ट हाउस ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैड इधर वाला तो मैंने सुना है कि इट्स इमर्जिंग फील्ड है। Oh, dermatology. I love dermatology because, like, I was more inclined for hospital or plus psychiatry and dermatology were the only allied specialties that I wanted to go further in. लेकिन साइकेट्री आई वाज लाइक मुझे अगर डर्मेटोलॉजी ना मिले तो मैं साइकेट्री ले लूंगा लेकिन फिर मुझे मिल गई थी तो आई वांटेड टू इट लेकिन वहाँ जो मुझे टीचर मिले ना तो दे एम्पलीफाइड माय एक्सपीरियंस सो मच और इतना अच्छा किया कि आई हेटेड कॉस्मेटोलॉजी एट द एंड और जो पैथोलॉजीज होती थी ना दैट एक्साइटेड मी सो मच इतना मजा आता था व्हेन आई वाज डायग्नोज अ पेशेंट उसमें कॉस्मेटिक्स तो आ जाते कि फ्रेकल्स हैं वो तो हो जाता लाइक इट वाज इजी दो मेडिकेशंस दे दो
लेकिन जो पैथोलॉजी इस पे अंदर बनता जाता था ना, that was what interested me the most. अच्छा, so like it was unintentional. कुछ लोग It होते was, हैं हाँ, जिनका पहले से एक प्लान होता है, like some past history or whatever. ना cosmetology I like because I guess aesthetics के साथ थोड़ा था ना, थोड़ा बहुत like you can say कि dharma and art could go hand in hand, plastic surgery and art could go hand in hand, like a small percentage of it. लेकिन the pathology is like way better. Flawless. Vampire and aesthetics are just move on. Okay, so do you have any plans for like USA Media Lab or any other thing? Honestly, Fahad, like I like to keep that part private क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि when would I face failure ना, and I'm really afraid of failure, तो उस वजह से like I do study a lot, लेकिन वो मैं like बाद में बता दूंगा जब That's all. कैमरा मतलब ऑफ कि हो keep जाए. it private until it's done. हाँ, like मैं दोस्तों को बता देता हूँ, लेकिन जब तक ठीक है, when I not ठीक है. experience something तो I never keep it. No, that's good. That's good. Okay. Whereby like you have a great influence of most of the people, including me. No? So I want to ask you, was there any person or is there any person who influenced you or had your motivation? वही ना, अब यहाँ अयूब में if you say I would say Dawood fight like when he influenced me in a very positive way, बहुत like most of what my वो जो है ना आज देख रहे हो that's because of Dawood. Like I wish you guys would meet him, लेकिन वो चला गया. I guess वो आपसे भी He was कितने I साल guess senior? 3 years senior to me. 3 year. Okay. मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो उसके थर्ड ईयर के एग्जाम हो गए. I think he was in third year. I guess he was in fourth year उस टाइम. तो 3 साल का Would you like to gap था. share the first encounter you had with Raul? I remember, हाँ, I think it was fooling होती थी ना यहाँ पे. तो although I was staying outside of hostel for the first few weeks, I was sticking out क्योंकि मुझे पता था कि क्या होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वैसे बॉयज हॉस्टल्स डॉम्स में. तो like कुछ सीनियर्स थे, they were being harmless fooling, वैसे डांस करा लेकिन things. तो एकदम से दाऊद भाई आए, he opened the door और कहते like सीरियस फेस से कि ये लोग तुम फील करा रहे हो. I was like, हाँ. कहते कि एप्लीकेशन लिखो, इनके खिलाफ इनके नाम लिखो और डीन को फॉरवर्ड करो ना. मैंने लिख दी, लाइक उसमें मैंने लिखा, मैंने कुछ बकवास लिखा था ना उसमें, लाइक एज पार्ट ऑफ मी न्यू दैट दैट गाय वाज लाइक फूलिंग विद मी टू. मैंने लिखी उसे दी है. तो ही चेंज्ड लाइक 180 ना, कहते हैं तुमने इनके पीछे एप्लीकेशन तो क्यों, तुम्हारे सीनियर्स है, तुम ये करते हो. ये क्या हो रहा था. उसके बाद लाइक आई गेस आई मेट हिम, एक कोई चारसदा वाली टी पार्टी थी और उसमें हम मिले. उसके बाद वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मूवीज एंड स्टफ एंड दैट्स व्हाट स्टार्टेड. I guess जो major interactions होती है ना, like with your senior, that's through the ragging and fooling one. हाँ लाइक सही है. Seniors who rag. हाँ मुझे लाइक आई एम अगेंस्ट वो फिजिकल हरासमेंट और वो जारी बकवास जो होती है, लेकिन बाकी जो फूलिंग होती है ना, हार्मलेस वंस, लाइक सही है. यू आर अ शाय पर्सन, मैं करूंगा तुम्हारी फूलिंग और मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं करूंगा तुम्हारी, तो बहुत अजीब लगेगा. लाइक यू वुड फाइंड इट वेरी वियर्ड. मैं 2 गालियां भी बीच में दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली इट वुड लाइक वो शाइनेस तुम्हारी तुम्हारी थोड़ी से खत्म हो जाएगी. Okay. दैट इज समथिंग लाइक जो प्रो है उसका. बाकी जो वो बकवास कर रहे होते दैट आई एम टोटली अगेंस्ट. अयूब की colleague तो वैसे भी काफी फेमस है, हाँ, all medical college. और क्या आपको कोई ऐसे एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना, बिकॉज़ आई सेड आई वाज 3 वीक्स, 2-3 वीक्स में बाहर था ना उससे, तो इतनी कोई फिजूल नहीं हुई कभी. लाइक इट वाज जस्ट हार्मलेस स्टूपिड फूलिंग. आपके साथ तो हुई होगी ऑब्वियसली. वो जो आप मेरे साथ हुई है ना, नहीं ना, मैंने यार यहाँ से एक बच्चे से कराई थी. आई वाज लाइक उसे कुछ कर ही नहीं रहा था. मैंने कहा तिलावत करो ना, और मेरे साथ 3 लोग खड़े, तो उसे तिलावत शुरू की, वो चला गया. तो मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई तुमने हमारी फूलिंग कराई है. उसे अभी भी वो मेरा मजाक उड़ाते हैं उसके बारे में. fooling your सवाब तो बता. हाँ, it's weird. I saw your stories about anime. I think you love anime a lot. बहुत ज़्यादा. So is it linked to like because I know that you love Studio Ghibli also. So is it related to that thing? यार अब सरप्राइजिंगली आई डिड नॉट नो स्टूडियो जिबली. जब मैं आई गेस फर्स्ट या सेकंड ईयर तक आया हूँ ना, तो फिर मेरा लुक्ड ऑन दिस कैटलॉग ऑफ द मूवीज, तो आई रियलाइज कि सारी हमने देखी थी बचपन में. सरप्राइजिंगली अब उस टाइम वो रेंटल्स होती थी ना सीरीज की. तो ही हैड ब्रॉट अस ऑल द स्टूडियो जिबली अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, मुझे पता नहीं है. मैंने किकी's डिलीवरी सर्विस थी, प्रिंसेस मोनोनोक वाज माय फेवरेट, मेरे और मेरे भाई की, स्पिरिटेड अवे, हाउस मूविंग कासल, द कासल इन द स्काई, ये सारी लाइक बचपन में हमने देख ली थी. आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड बाय इट, लेकिन इट वाज नॉट लिंक्ड टू इट. मेजर जो एनिमे का वो शुरू हुआ ना, it was when my sister got me season 4 of वो था नारुतो's English dub.
उससे like the anime craze started, and I was like, this is a whole new world that I have to explore. मैंने आई हैव नोटिस कि जो लोग एनीमे देख रहे होते हैं वो फिर दे जस्ट डोंट गेट आउट ऑफ दैट वर्ल्ड पता उनको फिर है बाकी मूवीज अच्छी नहीं लगती No, वो there's स्टक like इन something about it जो बहुत प्यारा है anime. Like they have such complex stories and complex plots and characters and emotions जो बाकी में नहीं दिखता. और like I have like मेरे जो seniors थे ना अरकम भाई, he used to watch a lot. Huzaifa outside of my class fellow बहुत ज्यादा देखता है. I don't even like मैं कुछ थोड़ा भी नहीं देखता उनके मुकाबले में. कोई ऐसा एनिमे सीरीज लाइक यू like to recommend जो अब तक कर I started watching Attack on Titans. Like, exactly like at first मैंने जब शुरू किया था I guess उस टाइम 2 सीजन आए थे. तो I was like यार overrated सा है. I don't know, I never get into overrated stuff ना. मैंने बहुत सारी वो भी नहीं देखी होगी. पता है I haven't watched Inception, I haven't watched Interstellar. जो इस तरह जो अच्छी मूवीज है ना I know they are good. पता नहीं I cannot get into it. तो हुज़ैफा made me watch Attack on Titan. उसने मुझे रीस्टार्ट कराया. उस टाइम I guess 4 सीजन आए थे. I started it and it was so good. Attack on Titan like has a very good plot. बहुत प्यारा plot है. The score is really good. The characters are good. Everything about it is amazing. Your favorite character? Yeah, I would say Sasha, and although a lot of people are getting his eyebrows. Mikasa नहीं Yeah, नहीं है. Mikasa is a badass character, लेकिन Sasha क्या मैंने है? तो अभी एक सीजन देखा है तो I am loving her. Sasha, Gabi, you don't know Gabi, लेकिन you know Gabi, and you might eventually hate her. I love वो Armin, Erwin और Armin, कौन सा है? I His guess friend. Armin. I always forget the names. उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो कौन? आर्मिन होता है, एरविन होता है. आर्मिन, एरविन और लीवाई, ऑफ कोर्स लीवाई. लाइक ये these are some characters that I love. Okay, so ये enemies देखना और ये चीजें do you think like it helps you in your art or not? ना, I wouldn't say much. मैंने एक दफा पेंट किया था वो जो क्या था, स्पिरिट डमी का एक दो वो थे सॉफ्ट स्टिक. बाकी I was just more इस तरह कुछ I haven't seen effective with my art. Because I've mostly seen the people na जिनके who are linked to like this kind because this is also an art, not digital art and हाँ हाँ. illustration No, वगैरह. I have done digital art पहले, लेकिन Artists do like love to watch this kind of thing and also you created digital painting जो कि हाँ मैंने की है. हमारे उसके कार्यक्रम हाँ के हाँ उस पे हाँ भी आई वो थी. मैगजीन जो थी मैंने काफी डिजिटल में करता आ रहा हूँ, लेकिन I don't think that anime has affected it that way. तो भाई हम जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो आई यूज टू हेयर दिस लॉट के अयूब की जो दोस्ती हैं वो मौसम की तरह बदल भी रही थी तो डोंट लाइक इट टू मच अटैच टू द पीपल सो व्हाट इज योर पीओवी ऑफ द फ्रेंडशिप और द फ्रेंड्स यू हैव मेड हियर यार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फ्रेंड्स ग्रुप था ना वो अभी तक लाइक सिंस फर्स्ट ईयर अभी तक आ रहा है. तो यू कैन से कि आई हैव हैड दैट फ्रेंड्स तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह विद गुड फ्रेंड्स. यार यू हैव टू सी लाइक मैं बहुत दोस्त बनाता हूँ, और हुज़ैफा मेरा जो दोस्त है ही ऑलवेज मेक्स फन ऑफ इट. लाइक बहुत ज्यादा दोस्त बनाता हूँ, देन आई डू नॉट नो हाउ टू लाइक हैंडल इट, और मैं उनमें आई कैन नॉट कीप देम, वो टूट जाते हैं. तो मेरी भी अपनी गलती होती है, लेकिन आई थिंक यू मीट सम रियली अमेजिंग पीपल. लाइक वो इट्स अबाउट टाइम को पता चल जाए ना कि हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट, उस टाइम से पता चलता है. देखिए बात वी यूज्ड टू सी यू पीपल लाइक द कॉर्नर बुक शॉप के साथ all of हाँ your group used to sit there आज भी तो हमारा अड्डा है लेकिन I used जरा to see you हमारा sit there. जो वो था it was पहले वो वाला पिलर था क्रश हॉल में, लेकिन it was different pillars. फिर आखिर में हम कॉर्नर पे आ गए थे ना. अच्छा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में was actually AMC Arena. उस टाइम AMC Arena was not a thing. उस टाइम there were like 2 benches there, और हम वहाँ बैठ के हम म्यूजिक लगा रहे होते थे. like Aline, I used to make Alina bring like pasta lasagna every Wednesday है ना. और उसके बाद when I baked a few times, COVID में I started baking, right? तो उसमें I realized कि I had tortured her for like that month or so. हर Thursday लजानिया बनाती थी. फिर अरीज की जो अम्मी थी हर महीने हम उसे कहते थे टू मेक एक्लेयर्स, वो बना के लाती थी, और वहाँ हम पार्टी कर रहे होते थे लाइक पीछे. अभी भी देयर इज अ पिलर वहाँ पे, लाइक दैट पिलर अगर तुम देखो ना, राइट साइड वाला जो पिलर है उस पे हमने वो मेजरमेंट्स भी लिखे थे. आई गेस फर्स्ट ईयर में हम जब आए थे तो वी ऑल स्टूड विद द पिलर, और हमने एक दूसरे की हाइट्स देखी थी वहाँ पे. हम अक्सर हम आते हैं वहाँ पे देखते हैं. दैट वाज आवर स्पॉट पहले. फिर हम उसके बाद क्रश हॉल आ गए थे बिकॉज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है. तो the spots have been revolving all time. So mashallah like you had a very good bond with your friends और अभी भी चल रहा है because it's unusual in a you ना ज़्यादातर लोग people used to say कि यहाँ पे सारे snakes हैं और आप देखोगे ग्रुप्स टूटते हुए और we But like it's a very weird term snakes, but I mean it's I find it as cringe though. लेकिन हो जाता है like it's life ना, वो तो हर जगह पे इस तरह हो जाता है. I guess It's जब not, सब like untoxic होना एक जगह पे तो like पता नहीं चलता I है feel फिर like हाँ like
इट्स बाउंड टू हैपन एवरीवेयर ब्रो। तुम यहाँ सिर्फ अयूब में नहीं कि सारे लोग यहाँ पे वही लोग फॉर सम रीजन आ गए हैं कि तुम्हें पीछे खंजर मारने वाले हैं। लाइक देयर आर गुड पीपल, अ लॉट ऑफ गुड पीपल है, लेकिन वो केमिस्ट्री बंदे लोगों की नहीं बनती। If you have to relive your experience of a you, so are there some things you would like to change or यार not? इसके बारे में वी हैव थॉट अ लॉट अबाउट इट, आई गेस नहीं। You Like lived a there is perfect but life here. हाँ, not perfect, like there have been imperfections, लेकिन that's part of the experience। एक बहुत अच्छा टाइम गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, I wouldn't change anything about it। You will created a lot of memories, I see. हाँ तो हमने Insta सब लाइक, Insta से भी पता लगता रहता अब है. लाइक हमने बहुत कुछ किया, वी हैव नेवर लेट एन अपॉर्चुनिटी गो टू वेस्ट। लाइक मैं और मेरा दोस्त जो था, वी हम कॉलेजेस गए, डिबेट्स गए, हम आर्ट्स के लिए गए, हम वी हैव इवन डन लाइक वॉलंटियर वो जो था मास्टर पेंट्स एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो पाकिस्तान की है, वी पेंटेड अ म्यूरल इन इस्लामाबाद, जो रावलपिंडी का कौन सा फातिमा जिनानी यूनिवर्सिटी है या समथिंग, नहीं लाहौर में फातिमा नहीं जान. आई थिंक देयर इज वन इन, पता नहीं उसका क्या नाम है, जो अयूब पार्क जाओ ना वहाँ पिंडी लेफ्ट साइड पे एक वॉल आती थी जिसपे पेंटिंग्स होती थी, उस पे वी पेंटेड एन इस्लामिया कॉलेज का जो वो था, हमने 5-6 दोस्त गए थे। लाइक वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स ना, हमने You've done बहुत। your college and schooling from Islamic college? नहीं नहीं नहीं, हमने वो मैंने मर्दान से किया है, आर्मी पब्लिक स्कूल से। आर्मी से हाँ भी हाँ। ऐसे ठीक है. अच्छा, would you like to share a fun experience or your memory 5 सालों में जो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ किया? There must be something because as far as I know ना, you love शोगल मस्ती वगैरह. तो मेरा कोई ऐसा इस तरह hidden कुछ है ही experience नहीं, like आई डोंट नो, हमें जो भी किया है लाइक हमने सबके सामने किया है, वी हैव नॉट लाइक मेड एनीथिंग प्राइवेट, हम यही पे करते क्रश हॉल में बकवास, लाइक हर दफा हम कुछ ना कुछ कर रहे होते, आई डोंट नो फॉर सम रीजन। मुझे वो याद आ रही है, हमारे जब मेडिसिन ए का पेपर हुआ था, एवरीबॉडी वाज सो स्ट्रेस्ड, और हम गए तो वहाँ जो ऑडिटोरियम था उसके बाहर हमने Huzaifa bought this new board game called Game of the Year ना, it's like a whole calendar और उसके ऊपर like the dice moves on, और there's like separate days for पता नहीं power ups, it's a long game। हम वो खेल रहे हैं वहाँ पे और कोई कह रहे हैं कि ये तुम लोग क्या कह रहे हो, पेपर है। और हमारी जब प्रेप्स की थी ना, तो इन बिटवीन और लाइक फाइनल ईयर प्रेप्स और फाइनल ईयर एग्जाम्स के बीच में जो 2-3 दिन, उस पे भी हम बाहर जाके चाय पी रहे होते थे ना, तो हमने पढ़ा था, ये नहीं कि हम पढ़ते नहीं थे, हमने बीच बीच में पढ़ा था, तो महत को हम उठा लेते थे कि ब्रो आज हम चाय पीते, वो हमें कहता कि भाई तुम लोग का एग्जाम नहीं हो रहा है या कुछ। तो पता नहीं, इस तरह आई कैन थिंक ऑफ अ वेरी स्पेसिफिक वो, हम लाइब्रेरी में बहुत बकवास करते थे, आई रिमेंबर फाइनल ईयर में, बिकॉज कभी कभार हम बहुत मजाक करते थे, तो एक साइलेंट वो गिगल्स होती थी ना, तो वन ऑफ द गर्ल्स स्क्रीम्ड एट अस तो हमने बहुत मजाक अच्छा, करा है। लाइब्रेरी में एक और भी बड़े मजे का एक्सपीरियंस होता है, तकरीबन हर एक से हो जाता है, द मोबाइल टोन वाली चीज़, या अक्सर आप कोई हैंड्स वगैरह उतारो तो वॉल्यूम अप हो जाए, या कोई हैपन विद मी टू आल्सो, तो वो इतना कोई एम्बैरेसिंग सीन होता है, हाँ एम्बैरेसमेंट हाँ। वाला, तो आपके साथ भी हुआ है कभी ऐसा? यारा पता नहीं फॉर सम रीजन व्हेनेवर व्हेन मोस्टली मेरे साथ आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग के हुआ हो, क्योंकि मैं साइलेंट कर देता हूँ अपना फ़ोन, इस तरह मुझे नहीं याद। एक दफ़ा याद है, हमने बकवास ये किया था कि व्हेन आई वाज़ इन फर्स्ट ईयर, तो दाऊद भाई हैड दिस आइडिया कि आओ जाते हैं लाइब्रेरी में, और वी गॉट अ मेजरिंग टेप ना, सबके प्रेप्स चल रहे थे, एंड वी स्टार्टेड मेजरिंग टेबल्स फॉर सम रीजन। लोग पढ़ रहे थे और हमने उठा के मेजरमेंट्स दे रहे थे, वो हमें देख के देखे तो लोग क्या कर रहे हो ना, ऐसी बकवास था, मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी उस पे। अच्छा, क्रश हॉल से मुझे दूसरी चीज़ भी याद आई है, लाइक यू पीपल हैव अ कम्युनिटी, क्रश हॉल सेटिंग कम्युनिटी, सो व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड दैट थिंग? यार वो आई मुझे सेड विद यू पीपल ट्वाइस थ्राइस आई गेस, लेकिन हाँ, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये हो क्या हमें रहा भी है नहीं बस. पता था वो क्या था, वो आई गेस हुज़ैफा और अली बैठे थे एक दफ़ा, मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और बाहर लोग भी थे, तो हम लाइक एज़ आई टोल्ड यू, हम क्रश हॉल में इस तरह बैठ जाते थे पिलर्स के साथ ना, तो वो भी वहाँ बैठे थे, तो समबडी केम एंड आस्क्ड हिम कि क्या है, तो ही सेड सिटिंग कम्युनिटी, राइट, तो मैं आया हूँ, तो वन ऑफ अस लाइक डिवाइस्ड एन आइडिया कि लेट्स मेक क्रश हॉल सिटिंग कम्युनिटी। तो हाँ, अली आई गेस था, तो इसने अकाउंट बनाया है, देन वी वर लाइक इसके फाउंडिंग मेंबर्स, तो आई सेड के अटैक ऑन टाइटन उस टाइम चल रहा था ना, तो यू लाइक यू कैन हैव 9 टाइटन्स, तो आई गेस हमजा अब्दुल्ला वाज द आर्बर टाइटन, आई वाज द फॉर सम रीजन आई वाज द फाउंडिंग टाइटन, अली वाज द कोलोसल टाइटन, हुज़ैफा क्या था उसका मैं वैसे भूल गया। लाइक हर एक वो फिज़ूल बकवास हम कर देते हैं कोई तुक ही नहीं बनती थी उसकी। इंस्पायर्ड सिटिंग कम्युनिटी नेम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, मेरा दोस्त है वहाँ इब्राहिम, उसने अभी बनाया केमो सिटिंग सोसाइटी, अभी वो वहाँ पे ये उसी बायो लेगेसी इज कंटिन्यूइंग ऑल. हाँ, उसने मुझे मैसेज किया था कि ब्रो हम कर ले, लाइक ब्रो आई वुड बी मोर देन हैप्पी फॉर यू टू डू दिस। There are a lot of emerging artists in medicine also now, in the first year, second year, and usually people who like to paint or
साथ साथ बाकी चीज़ें भी लेके चलना चाहते हैं, तो इज देयर एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू And I गिव? would tell them not to compromise their studies with it. Like, I would also want them not to like give up their art. I wouldn't want them to compromise their studies too. क्योंकि लोग होते हैं they're like सही ये हो जाएगा, लेकिन I would want them to study क्योंकि at the end of the day you are being a doctor, right? So I know a plastic surgeon, Danish Bhai from Khyber Medical College, so plastic surgery guy, and he's a really good artist. Or he did his, I guess, a fellowship there. I'm not sure because I'm not so close to him. Instagram भी बात होती है. So he was invited अभी recently to some art exhibition or something. It was quite impressive और वो अपना medicine भी चला रहे साथ साथ. Like you can always self practice वो art ना. But if you don't waste time and you have a timetable for everything, तो हो जाता है हर कुछ. You shouldn't like compromise either of those things. इस पे भी आपसे ये टिप्स में लेना चाहूंगा कि हाउ टू मैनेज दो दिस टू, Like you did manage because you scored second position in your final floor. वो सब वही कुछ अल्लाह की तरफ से था, था. वही सारे में था, गैस और you painting a lot of things also. Like I realized the mistake in first and second year कि मैंने शुरू से पढ़ना नहीं किया था. Like people used to tell me कि आखिर में पढ़ लिया करो. I hate that advice. Don't do that ever. I would never advise that to anybody, especially somebody who studies a lot like me. तो मैं फाइनल ईयर में जब मेरा जो जूनियर था महद, उसके साथ भी यूज्ड टू हैव दिस पोमोडोरो सेशन ऑफ वो जो होता है ना फॉरेस्ट ऐप पे, हम एक रूम बनाते थे, वी वुड स्टार्ट स्टडीइंग. तो एक तो जो मटेरियल्स आई गेस आई चोज दे एनहांस्ड एक्सपीरियंस सब कुछ. और शुरू से चूंकि पढ़ा था तो उसमें मैं पेंटिंग भी करता था, सब कुछ चल रहा था. I guess your friend circles matter a lot in this. अगर हाँ पढ़ने वाले हों, हाँ वो भी सब अल्हम्दुलिल्लाह ऑल माय फ्रेंड्स आर गुड अचीवर्स. अभी they are taking their like board exams, right? International board exams. So all of them have done very well in like medicine field. अच्छा है friend circle भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह. Khubaib bhai, you have a very good sense of humor also. अब मेरे साथ Facebook पे ऐड है. I see your memes, लेकिन पता है half of the memes मुझे समझ ही नहीं आती कि It's कौन से level basically पे humor है. वो क्या And यार. also I've heard कि you send memes to your TMO fellows. Like लोग seniors के साथ काफी formal meme करने लगते हैं. सीएमओ जो ये है ना, मैंने बोला था ना, आई हैव फाउंड रियली गुड सीनियर्स. द थिंग अबाउट वो है ना कि सीनियर्स के साथ गप लगाना, फॉर सम रीजन पीपल बॉयज स्पेशली हैव दिस वेरी स्टूपिड बिहेवियर कि वो सीनियर्स के साथ गप लगाने से व्हाट दे डू, दे स्टार्ट डिस्कसिंग गर्ल्स. एक वो दैट्स द फर्स्ट, लाइक इतना अजीब लगता है, इतना स्टूपिड लगता है, इतना नीच लगता है वो. लाइक ब्रोस हैव अ नॉर्मल रिलेशन और देन इफ इट्स बाउंड टू हैपन वो हो जाता है. मेरे काफी अच्छे दो सीनियर्स हैं, इवन दो दरमा में आई हैड अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ गुजरात, ही इज अ कंसल्टेंट, इज वेरी सीरियस. पर हम मीम्स भेजते थे एक दूसरे को ना. तो और बाकी वो मीम्स की भी आई हैव बीन लाइक मैं बहुत ज़्यादा आई हैव अ लॉट ऑफ पॉप और मूवीज और वो सारी ना, आई हैव वॉच्ड लॉट ऑफ गार्बेज स्टफ. तो उस वजह से आई गेस दैट हैज एडेड इनटू दैट सेंस ऑफ The ह्यूमर दैट आई recent हैव meme डेवलप्ड. you've shared ना, मैंने कल रात को ही देखा है. तो I समटाइम्स व्हेन आई wanted गेट कि लाइक, मैं आपसे पूछूंगा कि what कभी is कभार this? जब मैं होता हूँ ना, लाइक आई डोंट फाइंड एनीथिंग, व्हाट आई डू इज आई गो टू माय फेसबुक एंड आई लुक एट द मीम्स दैट आई शेयर. और लाइक जिस पे जीरो लाइक्स होती है ना, जीरो रिएक्ट, वही दैट्स द बेस्ट वन दैट आई लाइक. सब मैं देखता हूँ आई शेयर तो बता. ये मैक्रो Yeah, मैक्रो Metro 250. 15 Explain it to me because I didn't get it. वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ना Okay. फॉर पीसीज विदाउट, क्या पीसीज विदाउट क्या होता है, आई फॉरगॉट. दिस मेड मी chuckle so good. एक मैं सारी फिजूल बकवास शेयर कर रहा हूँ. आई लव दिस. इससे पहले वाला जो था, आपने जो मीम शेयर किया वाला, that is kind of good. Who is this? Who is a friend of mine? So like this is all देखो like nobody reacts to it. सब लोग मेरे से पूछ रहे हो ये क्या कर रहे हो, एक मुझे भी नहीं पता bro. Just go win it. ठीक हो गया. तो थैंक यू सो मच हो गया भाई, आप यहाँ टाइम निकाला. इट वाज अ वेरी फन टॉक विद यू Thank you. और अच्छा लगा. Likewise. आई एम ऑनर्ड टू हैव यू एज माय फर्स्ट गेस्ट. Thank you. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को हम आगे भी कैरी ऑन रखें अच्छा. और मे बी विद सम न्यू एक्सपीरियंस इन फ्यूचर आपको इंशाल्लाह. दोबारा मैं इनवाइट करूँ इंशाल्लाह. एंड हैव अ फन टॉक. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.